हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? सपोज दिस इज द बॉडी वी हैव कंसीडर्ड। अब इसके ऊपर अगर नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग, राइट, बहुत से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3, F4 एंड सो ऑन। सभी फोर्सेस एक्ट करने के बावजूद भी इफ दिस डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, राइट, सो मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, बहुत से फोर्सेस पर काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, देन सच बॉडीज आर कॉल्ड रिजिड बॉडीज। दूसरा, फॉर एग्जांपल ऐसा कंसीडर करो कि ये एक स्पंज है, स्पंज रबर का एक ब्लॉक लिया हमने, ऑफ कोर्स 3 डायमेंशनल, उसका सेक्शन हमने दिखा, रबर का है। अगर इसको हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इसका शेप, सपोज एक पार्टिकल यहां कंसीडर किया, दूसरा पार्टिकल यहां कंसीडर किया इसका। अब इसका डिस्टेंस है कितना? इसका डिस्टेंस है सपोज D1 है। जब फोर्स अप्लाई करेंगे हम, राइट, सपोज हमने F1 F2 अप्लाई कर दिया, तो इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। अब ये पार्टिकल आ गया यहां, ये पार्टिकल आ गया यहां, ये नया डिस्टेंस हो गया D2। मीन्स बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस रबर ब्लॉक, सेम पॉइंट्स का डिस्टेंस अभी रिड्यूस हो गया, मतलब चेंज हो गया। इट मीन्स दिस रबर ब्लॉक इज नॉट द रिजिड बॉडी। तो कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी इज क्लियर। नाउ इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हेन हम सब फोर्सेस जब लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट, देन इफ सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस F एक्सटर्नल, सपोज अभी जो ये बात करेंगे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेंगे, तो ऑल द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इफ 0, देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? वी नो वन थिंग, dp अपॉन dt इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। अभी एक्सटर्नल वर्ड नहीं यूज करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली, बिकॉज वी डोंट गेट एनी काइंड ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। सब फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेंगे। So this we know. If this is equal to 0, it means P is constant, right? And when P is constant, linear momentum is constant, means velocity is constant. So when velocity constant means it may be 0 also, it may be having certain magnitude and direction along the straight line. So linear momentum is constant when the external force is 0, and in this case body is said to be translational equilibrium. लेकिन ये फोर्स 0 हो सकता है, सो फोर्स 0 होने के बावजूद भी एक डिफरेंट तरह का मोशन हो सकता है, दैट इज रोटेशनल मोशन। एंड वी नो फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, राइट, सिग्मा ऑफ ऑल द external torque is, again torque should be equal to 0. अगर ऐसा सिचुएशन आता है, it is called rotational equilibrium. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So in this case what happens? We know dl, that is angular momentum, rate of change of angular momentum. If this is equal to 0, then the object will be in rotational equilibrium. Means when angular momentum is constant,
then the rotational equilibrium. When linear momentum is constant, that is translational equilibrium. F is equal to 0 बोलते हैं, इसका मतलब हो गया कि x के डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, Fy will be equal to 0 and Fz will also be equal to 0. Similarly, torque along x-axis is 0, torque along y-axis is 0 and torque along z-axis is 0. Because the torque, if it is in space, direction is not along x, y or z, then the resolve करेंगे इसको x के डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में, z के डायरेक्शन में. So all must be equal to 0. In this case, it will be rotational equilibrium, and in this case, it is translational equilibrium. Right? Concept is clear. So various examples we will look at, then it will be more clear how it is being applied for the equilibrium. There will be static equilibrium of the object as well as even the constant velocity it is going. In that case also it is said to be dynamic equilibrium. In case of static equilibrium, that is sigma f must be equal to 0 and sigma tau must be equal to 0. About the rotational, the moment we talk about, moment of a force, आपको एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा. Suppose this is a rod, right? इस रॉड के ऊपर सपोज एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है F, एंड उसके पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में जो F इधर एक्ट कर रहा है, सो वेक्टोरियली वी विल से इट इज अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज वाई माइनस F. F का डायरेक्शन ये, माइनस F का डायरेक्शन ये. इफ वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट, इफ यू हैव टू फाइंड द moment of the force. So if you look at net force, sigma F we are talking about, this is equal to what? Sigma F, that is F in this direction plus minus F in this direction, and that is equal to 0. Means net force acting on this is 0, but torque acting on this is not equal to 0, right? So it will give a rotation of this rod about this point. इसका rotation ऐसे होगा, right? Here tau is not equal to 0, right? It will go anti-clockwise movement, right? So these forces will give anti-clockwise turning to the rod about the point O. Suppose this point from O बोलते हैं, it will be anti-clockwise. I have the reverse force applied, this will give clockwise movement, right? Anti-clockwise is taken as positive. Clockwise is taken as positive, and clockwise turning is taken as negative. Anti-clockwise the convention कि अगर moment निकालने का है, moment of the force we know, that is about this point we have to take and this perpendicular distance, right? And this force into perpendicular distance. Suppose this distance is L and this angle is theta, so tau will be F L sin theta. This is the magnitude of the torque acting, right? Force into perpendicular distance, and it will give anti-clockwise. Anti-clockwise torque is taken as positive and clockwise is taken as negative. So if we solve a few examples, then concept will be more clear how the net force and net torque is found to see the static equilibrium of an object.
सो ये क्वेश्चन कंसिडर करेंगे. सपोज दिस इज अ रिजिड सपोर्ट. एक रॉड जो है it is supported over here. It is horizontal, right? And its length is 10 meter. Center of mass of this here. And mass of the rod that is capital M is equal to 20 kgs, right? 20 kg. एक मास यहां रखा है स्मॉल m and this mass is equal to 5 kg. Consider g is equal to 10 meters per second square. If this distance, ये distance अगर 2 meters दिया है, right? तो find out करो tension in this T1 and T2. We have to find, and this x distance, this is x is equal to 2 meter. We have to find T1 and T2. अब देखो, this rod is at rest. It is at rest means it is static equilibrium. तो static equilibrium में क्या होना चाहिए बेटा? सिग्मा f is equal to 0 and sigma tau is equal to 0. ये होना चाहिए. वेक्टर सम है, वर्टिकल फोर्सेस है, राइट? सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस विल फाइंड. इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg, इसका वर्ड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg, स्मॉल mg. सो डाउनवर्ड फोर्सेस आर दिस, upward forces T1 and T2. So we can say from this relation that is T1 plus T2 is equal to mg plus mg, right? Vertically downward force, vertically upward force, net force will be balancing. So both the sum of these two forces will be equal to sum of these two forces. So therefore we can write T1 plus T2 is equal to m plus m into g, और m कितना है? 20 plus 5. So 20 plus 5 into 10, that is 250 Newton. Sum of these two forces. अब देखो, we have to find total torque of all the forces. अगर इस पॉइंट से A and B, अगर A के अबाउट हम टॉर्क निकालते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं अबाउट A, so since T1 is, this string is passing through the point A, so torque or moment of the force about this point by this T1 will be equal to 0. क्योंकि perpendicular distance कितना होगा? 0 होगा from this point, right? It is passing through. So moment of a force about a point. When force, line of action of this force is from that point, then torque about that, for that point will be equal to 0. समझो, ये ऑब्जेक्ट है, राइट? यहां पर फोर्स लग रहा है. About this point O only, we have to find the torque due to this force or moment of this force about this point O. That will be equal to 0, right? क्योंकि perpendicular distance of this force from this point is 0. अगर ये दूसरा फोर्स हमने लगाया इस तरह से F1, अब torque due to this about this point O will not be 0 because ये perpendicular distance यहाँ पर D है. So here torque will be F1 into D, right? ये हो जाएगा इसका F1 into D. And this perpendicular distance for this force is 0. It means torque due to this force or moment of this force about this point O will be 0. अब देखो, यहाँ T1 है passing from A about this point,
moment for this is equal to 0. So rest of the forces will be look at. अब देखो ये दोनों forces जो है mg and capital Mg and small mg, this will be clockwise movement, but this T2 will try to give anti-clockwise movement. And since the rod is at rest, it is a static equilibrium, so torque due to this or moment of force due to these forces will be equal to moment due to this T2. So you can write T2 into this distance is 10 meters, so this is equal to 10 is equal to, it is giving anti-clockwise. Anti-clockwise we can take a positive, then these two will give clockwise, so clockwise means it is negative, so minus mg. Mg is what? Mg into this distance, that is 2, minus this capital Mg into, this is the midpoint because it is center of mass, that this distance is 5, that is equal to 0. That is net torque about this point is 0. So we can find by putting the different values रख देते हैं, फिर उसके बाद T2 का वैल्यू निकाल देते हैं. Very easy, you can solve it. So see, T2 into 10 minus small m is 5 into 10 into 2 minus 20 into 10 into 5, that is equal to 0. So क्या हो जाएगा? 10 T2 minus, this is 100 minus this is 1000 is equal to 0. Therefore 10 T2 that is equal to 1100, therefore T2 is equal to, this 0 will go, that is 110 Newton. This much force, 110. So we can find T1, and therefore T1 is equal to 250 minus 110, that is 140 Newton. So these two forces we could find. So we can see the calculation of it once again. Small m is 5 into 10, the value of G is 10 into 2 minus 20 into 10 into 5, 1100. So this way we could find, in the static equilibrium we could find both the tension in the string when it is in static. It is an application of conditions of equilibrium when the forces are acting on the object. So we will be taking more questions based on equilibrium in my next video. Till then, all the best. Goodbye. Take care of you.